जय जगन्नाथ व्यूअर्स आज वीडियो आम डिस्कस करवा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जोटा कि आपण मानकर ओएसएसटी रो फर्स्ट यूनिट पेपर 1 सिलेबस रो आपनकर फर्स्ट यूनिट होची ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ही इंपोर्टेंट यूनिट एटा जोटा कि आपण मानक पई केवल ओएसएसटी पई न आग को आपण जो एग्जाम देवा पई जाउछंती टीजीटी एसएसबी टीजीटी हो बा आरएसटी हो और नेक्स्ट ईयर जदी ओटीटी अप्लाई करिया पई जाउछंती देन आल्सो फॉर दैट এই यूनिटा आपण पई इंपोर्टेंट रहिबो। तो आमे फुल कॉन्सेप्ट डिस्कशन करबानी आमे केवल एमसीक्यू डिस्कशन करबा एई वीडियो रे एंड जो एमसीक्यू रे किछि कॉन्सेप्ट थिबो सेटा आमे डिस्कस करबा। तो आशा करे वीडियोटी लास्ट जांगे निहाती देखिबे। जदि वीडियोटी भल लागिला तबे चैनल को सब्सक्राइब करी निजर संगसाथी मानक सहित चैनल को निहाती शेयर। सो स्टार्ट करबा आज रो फर्स्ट क्वेश्चन ग्रोथ मेनली रेफर्स टू एंड ये सेटा स्टार्ट करा पूर्व मु आपण मानन को टिके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विषय रे टिके फरक देखै दउची। एटा देखंतु डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जस्ट हमें टिके डिस्कस करि देला परे तापर हमें जिबा हमर क्वेश्चन को सो दैट विल बी इजियर फॉर यू। क्वेश्चन अटेंड करिया पई आपन को इजी होबो। देखंतु ग्रोथ कहिले हमर इंक्रीज इन फिजिकल साइज ओके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमको एका भली सबुतिले मध्य दुईटांका डिफरेंट टर्म। ग्रोथ कहिले हमर सब भले फिजिकल साइज जोटा कि हमर जेमते हाइट वेट बॉडी पार्ट्स ए सब रे इंक्रीज हैला आमे ताको कहबा और यार साइज पढिले आमे ताको कहबा ग्रोथ। व्हेयर एज डेवलपमेंट कहिले जोटा कि आपन को देखा हो नथिबो आपन कर मेंटल कंडीशन हैला इमोशनल कंडीशन हैला सोशल एबिलिटीज हैला ए सब स्किल टेस्ट कले ही आमे माने जानि परबा बट आको देखि कि आमे माने जानि परबा नाही। देन आपनकर ग्रोथ रे सब बळे क्वांटिटेटिव आको मेजर करी हबो दैट मींस सेंटीमीटर केजी एमति रे आपन मानकर हाइट केते हैला वेट केते हैला ए सब मेजर करि परबा आपन दैट्स व्हाई इट इज क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव कहिले आपनकर आको ओनली ऑब्जर्व करी हबो एंड इट कांट बी मेजर डायरेक्टली आपन आको मेजर करि परबे नाही ओनली थ्रू स्किल ही आपन आको ऑब्जर्व करि परबे ओके। देन इट इज इन्फ्लुएंस बाय हेरिडिटी ग्रोथ ता आपनकर मोस्टली हेरिडिटी द्वारा इन्फ्लुएंस ही थाए बा ग्रोथ आपनको हेरिडिटी जोगु ही को जने लंबा हैला जने हाइट कम हैला और मोटा हैला पतला हैला ए सब रे मोस्टली आपनकर हेरिडिटी फैक्टर करे बट योर डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट एथिरे हेरिडिटी रो जेति रोल थाए ताठू अधिक आपनकर एनवायरनमेंट रो रोल आसीबो। सो नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज ग्रोथ मेनली रेफर्स टू एबे हमें पढिले ग्रोथ मेनली रेफर्स टू व्हाट physical increase in height and weight. Then come to next question development is best described as देखो तो फर्स्ट में इजी क्वेश्चन नै छी तापरे हमें टिके डिफिकल्ट क्वेश्चन को जीवा लेवल ऑफ डिफिकल्टी मु बढ़ाइबी बस फर्स्ट इजी क्वेश्चन के से लगेबा डेवलपमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज डेवलपमेंट को जदि हमें बेस्ट डिस्क्राइब करू छे डेवलपमेंट देखो डेवलपमेंट मु कोन कहिले सेटा गोटे क्वालिटेटिव चेंज आपनकर ओके फिजिकल चेंज नुहे ओनली फिजिकल चेंज नुहे क्वांटिटेटिव चेंज तो केबे भी नुहे सडन चेंज भी नुहे ओके। तो आंसर जदी आपनकर आसला कोन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंज। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट डेवलपमेंट रो कैरेक्टरिस्टिक कोटा नुहे कंटीन्यूअस प्रोसेस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस सडन प्रोसेस एंड प्रोग्रेसिव प्रोसेस ओके कोटा नुहे पचाची इज नॉट आमे डेवलपमेंट को जदि देखिबा एटा गोटे कंटीन्यूअस प्रोसेस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस मध्य एंड प्रोग्रेसिव प्रोसेस मध्य बट सडन प्रोग्रेस नुहे। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पचारची योर करेक्ट आंसर इज सडन प्रोसेस। देखंतु आपनकर ग्रोथ रा गोटे कंटीन्यूअस प्रोसेस नुहे अप टू अ सर्टेन एज आपनकर ग्रोथ हबो बट आपनकर डेवलपमेंट थ्रू आउट लाइफ चलिबो एंड कंटीन्यूअस प्रोसेस ओके प्रोग्रेसिव फॉर्म रे चलिबो। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एटा मने रखिबे। द नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय एबे हमें एना संग जस्ट डिस्कस करले ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय हाइट एंड वेट ओके सेम क्वेश्चन इज रिपीटेड। द नेक्स्ट क्वेश्चन डेवलपमेंट डिपेंड्स मेनली ऑन ओके डेवलपमेंट काहा ऊपर डिपेंड करे ओनली हेरिडिटी नुहे ओनली हेरिडिटी कहले हमर ग्रोथ and only environment भी नुहे both upon heredity and environment that is option C
जस्ट या बिफोर स्लाइड रे हमें डिस्कस करले। Then which psychologist proposed the psychosocial theory of development? देखंतु very important psychosocial कहिले हमर किए देइथिले psychosocial theory किए देइथिले psychosocial theory आपनकर एरिक्सन देइथिले। ओके एरिक्सन का थ्योरी मु देखै दउची सेटा भी टिके मन रखि देबे। तो एरिक्सन आपनकर देइथिले साइकोसोशियल थ्योरी। तो फ्रॉइड को विषय रे देखिबा सिगमंड फ्रॉइड आपनकर कोन देइथिले साइको एनालिटिक थ्योरी। ओके साइको एनालिटिक थ्योरी देइथिले आपनकर सिगमंड फ्रॉइड। देन पियाजेट आपन माने जानि छंती कॉग्निटिव ऊपर थ्योरी देइथिले। देन थॉर्नडाइक आपनकर ट्राइलैंड। ओके so your correct option is then come to next question according to Erikson adolescence stage is देखंतु एटा आपण लगया पूर्वरु तो पुणी आपण माननकु आ गोटे देखंतु एरिक्सन का थ्योरी आपण जति भूली जाई छंती देन मो एठी आउथरे आपनकु रिमेंबर करि दउची। एठी देखंतु एरिक्सन का थ्योरी आपनकर अछि। देखंतु एरिक्सन को स्टेजेस ऑफ साइकोसोशियल डेवलपमेंट रो मो एठी पिक्चर ता देई देछि। टोटल 8टा स्टेज ऊपर एरिक्सन कहिथिले 8टा स्टेज कोन थिला हम एठी डिस्कस करबा। एटा जस्ट स्क्रीनशॉट नै जानतु बट जदि आपन पाखरे पेन आ कॉपी अछि निहाती एटा लेखि रखंतु बिकॉज़ आपन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रे एरिक्सन को स्टेज रु क्वेश्चन पाइबे ही पाइबे। तो एटा को पूरा मन रे छापी नियंतु को एज रे बा को स्टेज रे देखो स्टेजेस आपन को एज टू को मंथ रु और को ईयर जाके कंटिन्यू करे स्टेज ता एंड सेथरे आपनकर कंप्लीट कोन आसे दीटा अंक मु नै जाईछि। ए टेबलटा सबुठु आपण मानक पई इजी हबो। तो आमे जति शॉर्टली कहिबा एरिक्सन कोन करथिले ना जन्मरु आपणकर टिल डेथ वृद्धावस्था पर्यंत जेतेटा भी स्टेज अछि ताकू कोन नैथिले ना 8टी स्टेज रे नैथिले। तो ए 8टा स्टेज रे आपणकर गोटे मनीष तार छोट बेल ठारू बा पिला बेल ठारू से को संघर्ष सब तार साइकोसोशियल क्राइसिस कोन आसे सामाजिक संघर्ष करिया पई बा साइकोसोशियल कहिले मनो सामाजिक संघर्ष कोन आसे ता ऊपरे 8टा स्टेज देथिले। अर्थात को स्टेज रे तार को साइकोसोशियल क्राइसिस आसीबो। ओके रिमेंबर द टर्म दैट इज साइको सोशियल क्राइसिस। ओके तो एरिक्सन का ऊपर देथिले ना साइकोसोशियल क्राइसिस ऊपर ए 8टा स्टेज करथिले। 8टा स्टेज आपन कर देई देछि इन्फेंसी को ईयर सही टाइम रे कोन कोन कॉन्फ्लिक्ट आसीबो। तो ए सब कॉन्फ्लिक्ट जो एज रे आसुछि ताकू बा ए कॉन्फ्लिक्ट रो ए साइकोसोशियल क्राइसिस समस्त को लाइफ रे आसीबो। तो ए संघर्ष गुडी को जदी बा ए कॉन्फ्लिक्ट गुडी को हमर ठीक रे बा सफल भाबे जदी समाधान करि हैला देन गोटे गुड डेवलपमेंट आसीबो बा गोटे सुस्थ व्यक्तित्व गढ़ी उठिबो। ठीक अछि। तो फर्स्ट देखंतु आपनकर इन्फेंसी स्टेज रे 0 to 18 मंथ रे आसी आपनकर ट्रस्ट मिसट्रस्ट। ओके ए स्टेज ही आपन को पचारिबो जेमति क्वेश्चन टार मु जो क्वेश्चन एटी को आसीली जिबा सेटा एडोलसेंस रे पचारथिला आपनकर। एटी देखंतु एडोलसेंस रे आपनकर को कॉन्फ्लिक्ट आसीबो आइडेंटिटी एंड रोल ऑफ कंफ्यूजन। ओके आइडेंटिटी एंड रोल ऑफ कंफ्यूजन आसुची। तो फर्स्ट रो हमें जदी इन्फेंसी रो देखिबा ट्रस्ट मिसट्रस्ट एटा शिशु ता माँ बापा को जत्न उपरे विश्वास करिबा सिखे ए एज रे। तो ए टाइम रे से कहा पर विश्वास करिवो न करिवो से विषय रे कंप्लीट करथाय। तो माँ बापा को जत्न उपरे जे ताको जत्न करछि से ताको ही माँ बापा बोली धरिनी। देन सेकंड आसिला आपनकर ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट ए सब कोन ना निज काम निज इच्छा रे करिबा को ताको इच्छा हुए। देन सेकंड आसिला आपनकर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट पदक्षेप बनाम दोषबोध कौन से पदक्षेप नौछि। ओके आउ सेथिरे कौन तार दोष रहउछि। ठीक अछि एई भली आपनकर इंडस्ट्री इन्फेरिटी एई भली को एज रे कौन एटा स्क्रीनशॉट नै जानतु आ रिलेटेड क्वेश्चन आपण निहाती फेस करिवे। तो गोटे गोटे एबे डिस्कशन करले एटा वीडियो बहुत लेंथी हे जो बिकॉज़ सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर व्हिच वी हैव टू अटेंड। तो आसीबा जदी टेबल डा आपण देखुचंदी एबे हमें डिस्कशन करले एबे जस्ट हमें डिस्कस करले जे according to Erikson adolescence stage is according to Erikson the adolescence stage is कौन आइडेंटिटी वर्सेस
रोल कन्फ्यूजन ऑप्शन सी एबे ही टेबल ले आमे देखिले आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक सब बेले मन रखिथिबे आपनकर डेवलपमेंटटा जनरल टू स्पेसिफिक ही हेई थाए ओके स्पेसिफिक रु जनरल हुए एई दिटारे ही पिला कंफ्यूज होंती बट जनरल टू स्पेसिफिक हेई थाए ओके then come to next question which factors affect development the most देखंतु डेवलपमेंट को बेसी अफेक्ट करे को जिंस आपनकर डेवलपमेंट आमे जानिले जे हेरिडिटी आउ एनवायरनमेंट स्कूल टीचर ए सब किछि भी नुहे हेरिडिटी ओनली नुहे एटा ग्रोथ को अफेक्ट करे बट आमे जदी डेवलपमेंट कहबा बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट अफेक्ट द डेवलपमेंट ओके then motor development is related to okay motor development is related to motor कहले आपनकर पानी मोटर नु गाड़ी मोटर नु मूवमेंट एंड मसल्स ओके आमे हातटा छोट पिला हातटा केमते हलौची बा गोड़ केमते हलौची दैट इज खेलनाटा केमते झुमका केमते पिलाटा बुलौची दैट इज मूवमेंट और दैट इज कॉल्ड एज द motor development तार motor development सेटा होची then which stage shows maximum physical growth को एज रे आपनकर maximum physical growth हेई थाए very important question that is your adolescence ओके adolescence एज रे ही आपनकर सबुठु अधिका ग्रोथ हेई थाए physical growth ओके then growth stops after adolescence but development continues कहली till death आपनकर development चली थाए then come to next question who said development is a continuous process देखंतु development गोटे continuous process बोली के कहिथिले क्रो दी जनकर आपनकर सब बेले स्टेटमेंट पड़े जणे हेले आपनकर क्रो ओके लर्निंग ऊपर दीटा स्टेटमेंट अछि क्रो एंड ईएल थंडाइक ए दी जनकर आउ जणे हमरो थंडाइक ए दी जनकर स्टेटमेंट आपण माने मन रखिबे तो डेवलपमेंट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस एटा आपनकर क्रो एंड क्रो कहिथिले ओके थंडाइक कोन कहिथिले लर्निंग इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस देन कम टू इमोशनल डेवलपमेंट मेनली मींस इमोशनल डेवलपमेंट आपनकर कहिले कंट्रोल ओवर फीलिंग्स एटा जानि होउची इजी क्वेश्चन जतिक भी इजी क्वेश्चन आपनकर थिला हमें नेले वर्तमान हमें देखिबा the next question development occurs in human beings throughout the life ebe ame padhile then the meaning of development is of changes progressive series of changes as a result of motivation no that is series of changes as a result of maturation and experience okay remember it series of changes as a result of maturation and experience is the development okay the next question which of the following statement is not correct about development देखो development उपरे को statement टा आपनकर correct नुए एई भली question ही आपण माने in exam face करिवे okay that is development is not aided by stimulation okay stimulation de କିଛି ରୋଲ କରେନି ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ is not ପଚାରିଛି okay each phase of development has variation एटा ठीक अछि development is affected by cultural changes ए भी ठीक अछि each phase of development has its own characteristic behavior that is also right but जदि हमको कहउची the development is not aided by stimulation सेटा भूल development is aided by stimulation एटा होबा कथा okay so this is your right option एई भली क्वेश्चन ही आपन को मार्क करिया पय पड़िबो is not option को आपन माने श्योर देखिबे then come to which of the following characteristic of development is an incorrect one again देखंतु incorrect पचारिछि अंक भितरु कोउटा आपण मानक पई incorrect there are individual differences in development yes ठीक अछि development रे आपनकर individual differences थाए then development is the result of coincidences development is the result of coincidences no coincident ro result kebe bi nuhe development it is the continuous process right it is predictable but the wrong option is option 2 okay so in the next part we are going to discuss and agote question discuss kartaba पांचटा क्वेश्चन डिस्कस करी छाड़ दउची which of the following statement about development is correct देखो is correct incorrect पचानी तो development विषय रे को ऑप्शन टा करेक्ट आपनकर
The rate of development differs from individual to individual. Yes, right. The rate of development differs at every stage in individual, right. Then development is a continuous process also, right. So all of the above means all options are correct here. Okay. Then come to next question. Cognitive development means apanଙ୍କର development of intelligence. Okay. Intelligence ର development ही called as cognitive development. Cognitive development ଉପରେ କିଏ theory ଦେଇଥିଲେ? Piaget. Then in the next part we are going to discuss all other questions. Part 2 निहाती देखिए. Part 2 केबे भी मिस करिवेनी. Growth and development ର other parts मु part 2 रे ही अपलोड करूची and काली ही अपलोड करिବି.